एग्जाम देकर तुम्हें ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा कि तुम्हें एफर्ट कहाँ डालना है, और वो अगला साल तुम उस वैसे को उसको ज्यादा बेहतर तरीके से यूज करो। ओके सर। सर कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज के बारे में आप रिकमेंड कर सकते हैं? लाइक आई ऑलरेडी हैव डन 1-2 internship. Like I have done an online internship of 1 month. It's from DZ Monk, a Lucknow-based company, and then Tata Entrepreneurship. It's से कोर्स होता ही है, मेरा भी एक कोर्स था स्प्रेडशीट मॉडलिंग, और ऑन द जॉब एक्सेल का काफी यूज आता है। तो एक्सेल में प्रोफिशिएंट होना आपको कभी मतलब ये नहीं मतलब कभी खराब ही नहीं करेगा, ठीक है। और एक्सेल सिर्फ काम के लिए नहीं यूज किया है, पर्सनल लाइफ के अलावा अगर आपको कुछ करना है तो डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं आप, या कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अकाउंटेंसी अगर आपका थोड़ा कहीं लैग कर रहा है तो आप उसको उस स्किल को बिल्ड कर सकते हैं बेटर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। नो वरीज। Anyone else Yeah, have I their have a query? question. So, mainly हम लोग को सुनने को मिलता है कि अगर आप प्राइवेट जॉब्स के लिए जा रहे हो या MBA वगैरह एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपका CV बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो दे यूज टू टर्मिनेट दोज थिंग्स। तो ऐसा क्या बहुत कंपलसरी है कि वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए? और साथ ही साथ क्योंकि अभी हम ग्रेजुएशन में एंड ग्रेजुएशन थर्ड ईयर, तो देयर इज अ प्रॉब्लम दैट कि कॉलेज के साथ मैनेज नहीं हो पाता वर्क एक्सपीरियंस करना और साथ ही साथ बहुत सारे स्किल्स को एडेप्ट करना। तो क्या करना होगा? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि जनरली जो मार्केटिंग जॉब्स होते हैं या फाइनेंस जॉब्स होते हैं ना, उसमें वो लोग प्रेफर करते हैं जिनका कम से कम एक्सपीरियंस हो। ये इसलिए नहीं कि मतलब वो कंपनीज को कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा है उनको है कि जितना कम से कम एक्सपीरियंस होगा उतना आप दूसरी मतलब नई चीज सीखने के लिए रेडी हो। मतलब जैसे आपने सिर्फ अंडर ग्रेजुएट किया, उसके बाद आपने कोई जॉब नहीं किया, आप डायरेक्टली MBA करने आ गए और मार्केटिंग कंपनी को आपको स्क्रैच से मार्केटिंग या सेल्स सिखाना है। तो अगर आपने कुछ और सीखा ही नहीं है तो वो आपके लिए आप ज्यादा इच्छुक रहोगे वो सीखने के लिए, वो ज्यादा सीख पाओगे। तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज स्पेशली फाइनेंस और मार्केटिंग प्रेफर करते हैं। फाइनेंस में है कि या तो आपका वर्क एक्सपीरियंस हो तो फाइनेंस में ही हो, बैंक में या म्यूचुअल फंड में या कुछ किसी भी तरह का फाइनेंस रोल में हो तो ठीक है, वरना नहीं हो तो भी ठीक है, वो आपको शुरू से सिखाते हैं। और मार्केटिंग में जितना आपका कम एक्सपीरियंस है या नहीं के बराबर एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट मेरे टाइम में तो यही हुआ करता था, उतना एडवांटेज होता है। बट अगर आप जैसे ऑपरेशंस में जा रहे हो, जैसे अभी हमारे एक कलीग ने अभी बात किया था ना जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है और मटेरियल्स हैंडलिंग देख रहे हैं, तो उनके जैसा प्रोफाइल में जो है जो 5 साल ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, तो ऑपरेशंस जैसे रोल में या कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जैसे रोल्स में उन्हें ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उन्होंने एक फंक्शन को काफी डीपली समझा हुआ है 4-5 साल तक। तो वो अगर जैसे ऑपरेशंस होता है उसमें आपको बेसिक फंक्शनिंग की अंडरस्टैंडिंग होना ज्यादा जरूरी होता है, तो इसलिए उनके लिए ज्यादा एडवांटेज होगा वैसे रोल्स में, क्योंकि उनके पास ज्यादा एक वर्क एक्सपीरियंस है। तो हर तरह के स्टूडेंट प्रोफाइल के लिए वहाँ अपॉर्चुनिटी होता है। इनफैक्ट मैं जब MBA करने गया था तो मेरा एक बैचमेट था, उसका 7 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस था महिंद्रा में, और उससे भी जॉब मिल गया था काफी अच्छा महिंद्रा में ही और सीनियर पोजीशन पे। तो हर तरह, और मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे जिनका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, वो डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट के बाद आ गए थे, तो उनको भी जॉब मिल गया था। तो हर तरह के कैंडिडेट के लिए होता है, तो इसलिए वो कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और आपको अपनी रिज्यूमे बेटर बनानी है, तो सब जो वन बेस्ट चीज आप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा CGPA या मार्क्स ले आइए अपने अंडर ग्रेजुएट में, वो बेस्ट होगा। ओके सर, थैंक यू सर। Hello, sir. Hello. So I do have my query. Okay, sure. Currently, I'm pursuing biotechnology from St. Xavier's, and I'm in first year. And some people have recommended me to prepare for GMAT, IELTS, and TOEFL. And I don't know much about it. So please, can you guide me? Sure. So GMAT, IELTS, and TOEFL, right? Yes, sir. Okay. So if you remember, some time back, I was talking to someone and I had mentioned about MBA itself
being, I think I was talking to Samra, if I'm not wrong. So I had talked about MBA being in two different branches. One in India, after few 1 or 2 years of work experience from IIMs, or working for 5-6 years and doing MBA abroad. So if you're going for MBA abroad, then GMAT is will be helpful. Or if you want to do MBA from ISB Hyderabad, then GMAT will be helpful. And TOEFL and IELTS is just a test of whether you understand English or not. So generally, countries like USA or Canada or New Zealand or Australia or UK, they are primarily English-speaking countries, and they want to ensure that any student who come to their country and study are fluent in English for two reasons. First of all, if you are sitting in a classroom, you should be able to understand the professor, and the professor should be able to understand you. If you're in an English speaking country, you should have a certain level of fluency in English. So that is what those exams check. And it's not just TOEFL. If you are going to study in Germany, or if you're going to study in Korea, then you need to know the local language there. So it's a very basic thing. If you're sitting in the class, you should be able to understand the professor, and if you ask a question, the professor should be able to understand you. And the second thing is that when you're living in a different country, like I am living in the US right now, so it's not just classroom where I am going, right? I also go to the grocery store and buy things, or I go to the bus stop and take a bus. So I should be in a position to make conversation with the bus driver there, or the shopkeeper who sells groceries. So for basic day-to-day conversations also, you should be fluent. So I have given the TOEFL exam previously, and there they not only check your reading skills or writing skills, they also check your speaking and listening skills, and even IELTS does that. So these exams serve two purposes. If you're sitting in a classroom, can you understand the professor, and can the professor and your classmates understand you? And also, can you carry out day-to-day conversations? Because language makes a lot of difference. I'm not sure whether all of you have traveled in India, because all of you are quite young. But in case you have been to states like Tamil Nadu or Kerala, you can see how language differences come up. See, those two exams are not going to be a lot of challenge for you. It's just checking your English fluency. So I hope you got an overview of these exams. Yes, sir. Thank you so much, sir. No worries. And Yeah, Rohit, please go ahead. Yeah, sorry for coming up once again. Uh, No so, worries. so actually, my question was like I wanted to inquire you about a few things. Like, I've seen a like senior of mine who is there in the consulting thing. He's doing consulting in Can you repeat your sentence? I could not catch it. yeah. Actually, there's a senior of mine from the college. Okay. So he's doing he's like he did his MBA. I don't know in which thing, and now he's doing the consulting job. Where is Okay, he he's in a consulting company. It's quite a like renowned company named Deloitte. So I really like his lifestyle, like the way he go up like to few days, like आज कहीं तो कल कहीं, and the way like yeah Lots yeah of yeah. traveling. Lots of traveling. Yes, yes. Yeah, so he's traveling, and at the same time, he's giving consulting Yes, things. yes. He's giving ideas to the people who are Yes. in need. So I really wanted to know, like whatever I have anticipated till now, to do like talking to 2 to 3 friends of mine who are quite senior than me. Okay. They have said that it is necessary to be a part of any other job for 2 to 3 years and 5 years, and after that they can get you to a consulting company. Like, is it necessary for that to be a part of that, to have a work experience of 3 to 4 years? कि आप 4 से 5 साल कोई Yes, yes. कंपनी में काम कर पाएंगे, और उसके बाद तभी कोई एक पर्टिकुलर चीज में आप कंसल्टिंग जॉब कर पाएंगे. Like, हाँ is it नहीं, ये necessary? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसका Yeah, sir. मैं आंसर करता हूँ. तो यहाँ आपने जो आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक है. Consulting is one of the more lucrative and one of the more challenging jobs out of MBA. Typically consulting firms बहुत तरह की होते हैं, बट उनमें उनके साथ ना कुछ 2-3 चीजें
IIMs मतलब एकदम जो टॉप 10 होंगे कॉलेजेस, ठीक है, उस और वैसा भी नहीं है कि एवरी स्टूडेंट हु गोज टू दीज कॉलेजेस हैज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग इनटू इट। उसमें भी जो अपने अंडर ग्रेजुएट में टॉपर्स रहे हैं या कोई नेशनल लेवल पे टीटी प्लेयर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, कोई बहुत एक्सेलेंस है किसी फील्ड में, तो वो लोग वैसे स्टूडेंट्स को पिक करते हैं। वैसे जॉब्स कम होते हैं और बहुत मतलब सेलेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब इम्पॉसिबल टू गेट इन है, बट आपको वहां तक पहुंचने के लिए कॉलेज में, बट ऑन एन एवरेज थोड़ा 2-3 साल वर्क एक्स के बाद ही लोग कंसल्टिंग में जाते हैं। उसका एक बहुत सिंपल रीजन है, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो, और एडवाइस लेने वाला आपको उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो उसको आप पे फेथ और ट्रस्ट भी तो होना चाहिए ना, कि जो जिससे मैं एडवाइस ले रहा हूँ वो केपेबल है वो एडवाइस देने के लिए। और वो केपेबिलिटी आप प्रोफेशनल सेटअप में कैसे शो करोगे? थ्रू प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, राइट? कि आपने कुछ ऐसा किया, या तो आपने कुछ ऐसा किया, सपोज मैंने 4 साल आईटी में काम किया और मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ, तो वो बोले हाँ ठीक है, मैंने 4 साल का एक्सपीरियंस है आईटी में, मुझे आईटी रिलेटेड फंक्शंस आते हैं, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान दे सकता हूँ, जिसके लिए आप मुझे काफी ज्यादा